हाय गाइस, माय नेम इज अभिनव पुरी एंड आई एम योर करियर काउंसलर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि व्हाई करियर काउंसलिंग इज नीडेड, व्हाई इट इज द नीड ऑफ द आवर। करियर काउंसलिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चले आज की वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेन रीजन है करियर काउंसलिंग का, दैट इज टू क्लियर द कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। अब ये कंफ्यूजन होती क्यों है? क्योंकि आजकल देर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर इंटरनेट, वी हैव टू जस्ट गूगल इट आउट। तो स्टूडेंट्स आजकल they can get information from Google regarding careers, regarding colleges, regarding admission procedure, regarding entrance examination, regarding fee structure. So everything is available over Google, and students are bombarded with all the information. And let me tell you one more thing, that all information is not authentic also, because there is lot of paid information, advertisement over Google also. So students get confused. एंड सेकेंड थिंग, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर दोस्तों हम 15 से 20 साल पहले की बात करें तो पहले बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करती थी इंजीनियरिंग, मेडिकल में एमबीबीएस, और इन आर्ट्स टीचिंग, और इन कॉमर्स सीए। बट नाउ डेज न्यू careers are emerging, new age careers, and there are lot of career options, not only for science, commerce, but also for humanities and arts group. If I mention few of some career options, then artificial intelligence, Internet of Things, blockchain technology, data analyst, data scientist, new career options. Then if you go for commerce background, financial analyst, financial managers, investment banking, business analyst, business management, project management, and even for arts background student, there are new options like fashion designing, interior designing, graphic designing, mass media and journalism, and there are also traditional options available. So with increase in the number of options, now students are facing confusion. They are interested in more than one option. कई बारी स्टूडेंट्स का एक से ज्यादा करियर ऑप्शंस में भी इंटरेस्ट होता है, एंड दे गेट कंफ्यूज कि मेरे लिए ये ज्यादा बेटर है कि सेकंड ऑप्शन। एंड इवन नंबर ऑफ ऑप्शंस तो इंक्रीज हुई हैं। इवन नाउ डेज यू सी देर इज लॉट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज. Even if students are not getting seats through entrance examination, they can get seat in a self-financed university or in a self-financed course very easily. And let me tell you one more thing, students are going abroad also. Now this option is also available. Due to globalization, students are going abroad for higher education. Students are going to Canada, UK, Australia. So let me tell you one more thing, that we will make video on study abroad education counseling also, in which we will tell you how to choose right college and right courses according to the country. So let me finish this video. So students, there is lot of confusion due to lot of information, lot of options, and lot of perspectives. Now in our society, everybody has their own opinion. पेरेंट्स का अलग ओपिनियन है, सिस्टर एंड ब्रदर का अलग ओपिनियन है, फ्रेंड्स का अलग ओपिनियन है. So everybody will give you advice that you go for engineering, or you go for medical science, or you go for arts and humanities according to their own experience and according to their own understanding. So due to all these reasons, confusion create हो जाता है in the mind of student. And when they get confused, they get easily influenced by either by their parents, or by their teachers, or by their peer group, and वो अपने इंटरेस्ट को और अपनी पर्सनैलिटी को इग्नोर कर देते हैं, एंड दे जस्ट चूज द करियर विच इज एडवाइज्ड बाय ऑल दी अदर पीपल. सो उससे क्या होता है, दे विल टेक रॉन्ग करियर चॉइस और रॉन्ग करियर डिसीजन. अब इसके कारण जब वो रॉन्ग करियर डिसीजन लेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी लॉस ऑफ टाइम एंड लॉस ऑफ मनी. They will do graduation and post graduation, and it will take around 5 to 7 years to complete their education. And after that they realize that I am not suitable to this in this field. My skills and abilities are not up to the mark. I am not able to understand this education. So
अब उस टाइम पे क्या होगा, आइदर दे विल चेंज देयर करियर, दे विल डू री एजुकेशन, ठीक है, एंड दे विल अगेन इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी, और दे विल गो फॉर ए जॉब, एंड इवन इफ दे फाइंड ए जॉब दे विल नेवर गेट सेटिस्फेक्शन. They will always get negative thoughts regarding their job, and it will result into career dissatisfaction. इससे उनकी करियर ग्रोथ एंड करियर प्रोग्रेस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडीड, 40% employees are not satisfied with their jobs. And if we talk about of India, then 70% employees are not satisfied with their jobs. And it is a huge proportion. And why? Because they have not got the correct time. That is why career counseling becomes very important, because career counseling gives you right information at right time, and this information can save you from lot of stress, anxiety, depression, and lot of struggle. And it will also save you so much time and money, and you will get better understanding of all the career options available, which career options are suitable to your personality, which career options are according to your interest, in which career options you can excel according to your learning style, according to skill, according to your aptitude. So इन सब बातों को ध्यान में रखकर career counselor will give you advice to choose the right career path. एंड इन्हीं कारणों के कारण करियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन द एंड जो स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग राइट टाइम पर करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं, दे विल चूज राइट करियर एंड दे विल गेट करियर सेटिस्फैक्शन, एंड दे विल लव देयर जॉब, दे विल डू देयर ड्यूटी वेरी वेल. वो अपनी जॉब में ग्रो करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, दे विल रीच न्यू हाइट्स इन देयर जॉब. And even they will grab opportunities with both of their hands related to their job or even related to their allied careers. They will upskill them because they have interest in that field, and they will go for newer heights. So due to all these reasons, career counseling has become very important in our life. And students, I will advise you that you should go for career counseling at right time. Right time is as early as possible before you select your subjects after 10th class. So आज की इस वीडियो में इतना ही. आपको अगली बारी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एंड तब तक के लिए गुड बाय. प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, यूज मास्क, एंड ऑल्सो सैनिटाइज योर हैंड्स अगेन एंड अगेन. थैंक यू.